Good evening, everyone. Welcome to our new session of Family Affair. Today we have with us spiritual soul Abhinav. Welcome, Abhinav, to our show. Thank you so much for taking out time. His tagline is "Love You Zindagi." He's a coach and he's a life coach and he's a mentor and he's been coaching people across various facets of life. I think getting that intuition and faith and it's a God gift. So he's been helping many of us, in their daily struggles. So welcome, Abhinav. Thank you so much. Could you please tell us a little bit more? These terms are, fairly new. So we wanted to know, how, what do you actually do? I know you have other work as well, but as a life coach and as a mentor, how do you help people? And as you go by the name Spiritual Soul, so can you let us know a little bit more? Surely. Thank you, Richa. Thank you very much for making me the guest of discussion today. I would like to introduce myself as a spiritually named as Spiritual Soul Abhinav, a motivational speaker and a spiritual coach, guiding people towards the direction of positivity in their lives. Usually, हमें positivity के लिए बहुत सारा content मिल जाता है. चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हो, बहुत सारा ज्ञान हमारे आसपास ऑलरेडी बहुत है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे उस ज्ञान को हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन चीज़ों को, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और आज का हमारा डिस्कशन ही सारा पॉजिटिविटी के अराउंड है। लव यू जिंदगी इज समथिंग व्हिच आई स्टार्टेड इन 2015 towards positivity of all. It's been now 7 years. And when I started this campaign of Love You Zindagi, the thought was that if I can bring positivity to the life of at least 5 people, my task is done. Looking back now, from 2015 till date, I think I have touched more than 9,000 people across the world towards positivity. It's not just people listening, it is the people who are working on themselves towards positivity. और किसी को पता नहीं था कि पेंडेमिक आएगा, चैलेंजेस होंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन जिन्होंने सही समय पे अपनी लाइफ पे काम किया, they are more stronger today and they have handled the challenges well in their life. So everything is the right time. Wow. I'm not saying people missed out. जिसका सही समय था उसने काम किया. And I guide them, I tell them how to make positivity in their life. But the important thing is your efforts. Wow, so it's That's it. actually also about application, पढ़ते तो सब हैं, everybody, does things, but it's all about actual application, how you're actually moving forward. So 9,000 is a very fairly large number, and this is, what is documented. I'm sure there's a lot of percolation effect as well, because if one gets inspired and one sees changes, that person is in that mental frame to, help others as well in their, realm. So tell me one thing, Abhinav, what are the kind of stress we are facing with, post pandemic in general in life? Because, I think right now everybody is going through so much of changes and there's so much of struggles, daily struggles, so what kind of stresses are there? And, if you can speak a little bit more in detail about them. Surely. स्ट्रेस का नाम आते ही हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि स्ट्रेस सिर्फ नौकरी में होता है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को होता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं। लेकिन स्ट्रेस हर इंसान की जिंदगी में है। एक हाउसवाइफ के लिए भी स्ट्रेस है इक्वली हाई, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है अकेले। एक स्ट्रेस है स्कूल के बच्चे के लिए भी, जहाँ पे कि उसको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी देने हैं, अपनी मस्ती भी करनी है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को भी पार करना है, सोसाइटी में अपना नाम भी लाना है। तो स्ट्रेस तो उसके लिए वहां पे भी बहुत भरा हुआ है। चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बच्चे हो। एक एंटरप्रेन्योर जो आगे बढ़ रहा है अपने सपने को पूरा करने के लिए, उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। दुनिया से लड़ करके अपने सपने की तरफ जा रहा है, तो स्ट्रेस शुरू से ही है। और मैं एक चीज एडिशनल ये कहना चाहूंगा कि बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमने जीवन में कुछ नहीं सीखा, सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखा। स्कूल की पढ़ाई करते गए, स्ट्रेस मिलता गया, टाइमलाइन एग्जाम आ रहे हैं, लास्ट दिन पे ही हम जागते हैं कि कल तो एग्जाम है, भागा दौड़ी करनी है। भले ही हमें 5 दिन का टाइम मिला हो, लेकिन हम आखिरी दिन ही पढ़ाई करेंगे, तब आता है हमें स्ट्रेस। प्रोजेक्ट Yeah. वर्क कॉलेज में देना हो, कल लास्ट डेट है, आज सिनॉप्सिस बनानी है, भागा दौड़ी करनी है, बचा लो कोई, लास्ट डे, स्ट्रेस। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफिस में 2 दिन का टाइम मिला था, सैटरडे संडे, लेकिन काम शुरू हुआ संडे की रात को ही
कि मंडे डेडलाइन है, पूरी रात बैठ के काम करेंगे, स्ट्रेस। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेस हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, अब आएगा इंपॉर्टेंट बात, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस हमें मिलता ही जीवन में इसलिए है कि हम अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप कर सकें। स्ट्रेस नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, तो आप डिट्रॉइट होते जाओगे, अपनी एनर्जीज में डूब जाओगे। स्ट्रेस आया है हमें जगाने के लिए कि हम बेहतर कर सकते हैं। So stress is important, not So it's to all worry. also about channelizing the stress which you're facing into positivity. There's a way to do that, right? Yes, it's So आज important से to आप बोल रहे हैं हमें understand. जगाता है तो like in what way? Like if you can elaborate. देखिए, स्ट्रेस आपको जगह इसलिए रहा है क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी आपको पता लगता है कि आप तो मल्टी फंक्शन काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको पता ही नहीं था कि आपकी पर्सनैलिटी इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज्ड है। सडनली जैसे ही काम करना शुरू किया, पता लगा लाइट चली गई, कोई ऑप्शन नहीं है, खुद ही जाकर के स्विच को चेक करना पड़ा, मीटर को चेक करना पड़ा। एक नई आर्ट ये भी पता लग गई कि मैं ये भी कर सकता हूँ। लैपटॉप में दिक्कत हो गई, गूगल में सर्च किया, टेक्निकल इशू है, रिजॉल्व कर लिया। तो स्ट्रेस आपको बताता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस, नॉट गेटिंग स्टक विद द प्रॉब्लम। यूजुअली हमारा स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब हम प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, हाँ, मैं किधर जाऊं? क्या स्ट्रेस बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस से घबराएंगे नहीं, टेक इट एट अपॉर्चुनिटी। अच्छा ये प्रॉब्लम है, लेट्स थिंक व्हाट आर द ऑप्शंस। यूजुअली पीपल क्रिप, क्राई, ब्लेम। course correct, व्हाट इज yeah, दिस थिंग? be resourceful, what all we can do. If there's a Yes, wall, there's always a this way time. to, surmount it. यस, दैट्स वेयर वी हैव टू फोकस कि एक रास्ता बंद है, हो सकता है दूसरा खुला हो, लेकिन हम उसको ढूंढे तो। अगर ये सोच हमने बना ली अपने एक स्ट्रेस में से, तो हमारी सोच हो जाएगी फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, नॉट गेटिंग Oh, स्टक विद द प्रॉब्लम्स। that तो is more धीरे धीरे important. द लेवल ऑफ स्ट्रेस विल आल्सो फॉल डाउन, क्योंकि आपने उससे लड़ना सीख लिया। ये एक सोच ग्रेजुअली आती है व्हेन यू गो थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द लाइफ। Wow, and you are there to help people out. So, at our platform, we have parents and, mother, father, kids, everyone. So I think all of us have different kind of stress to deal with. So quickly, we can go through, 4 or 5, important pressing, stressful points in our life. So we can start with, say, school and colleges, the kind of stress students are facing, as you said, exams, and there's a lot of pressure, there's a lot of competition, there is so much of, pressure on the kids to perform. So how do they deal with it? See, I feel a very important component is either it is school, college, or job, or anywhere. Time management is something which is very important. Disciplining our life. This is something which we miss out always. यूजुअली मैंने कहा ना आपको, लास्ट मोमेंट पे लोग जागते हैं। अगर हमने अपना टाइम प्लान कर रखा है, जो कि हम नहीं करते हैं अक्सर से, सॉरी टू से, बट अक्सर से हम लोग बिजी होते हैं या तो किसी मूवी प्लेटफॉर्म में, या गेमिंग में, या कहीं ना कहीं हमारी सो रहे एनर्जीज लगी होते होती हैं। हैं। हाँ, और ये सोच होता है कि अभी तो बहुत टाइम है। इट्स द ओल्ड स्टोरी ऑफ टॉर्टोइज एंड द रैबिट। अभी तो बहुत टाइम है, आधा रास्ता पार कर लिया, जीत ही जाऊंगा, आराम कर लेता हूँ। और क्या होता है? रेस हार जाता है। तो somebody who's focused towards the target, dedicatedly making small steps to move forward with the time management, will definitely win. तो हमारे लिए जरूरी है कि टाइम को मैनेज करें। अगर 3 दिन का टाइम मिला है और टास्क एक दिन में पूरी हो सकती है, तो पहले टास्क पूरा करें और 2 दिन करें मस्ती। ये नहीं कि पहले मस्ती और फिर टास्क। सो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Wow, So this is this is such a one good step. point. Yeah, time management is the key. I think, we keep everything for the, last minute, which is amounting to more stress than the actual job. Exactly. So time management, just like in school में, we used to have periods. There are 8 periods in a day. They are planned 1 week in advance. अगर कोई मिस Hmm. होता था तो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट लग जाता था। अगर ये पीरियड्स ना हो और शेड्यूल ना हो, तो जब मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं हो पाएगा पूरा। तो इसी तरीके से चाहे हम लोग अपनी जॉब्स में हो, वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज अवर टाइम। इफ यू आर इन द स्कूल, सिमिलरली देयर एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिंपल सा रूल है, जो समय है चला गया, वापस नहीं आने वाला, इट्स डन, we cannot rewind it back. This is first thing. Second thing is, if you have to manage your stress, you somewhere have to take care of your physical health as well. क्योंकि आप अगर, एक एग्जाम्पल है कि जो लोग
वेट्स उठाते हैं, अगर वो हैवी वेट उठा लें और उनकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती हो तो मसल में कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ जाएगा, इशू हो जाएगा। सो आपको उतना ही उठाना है जितना कि आपकी बॉडी मैनेज कर सकती है, लेकिन हम ये डिसाइड तो नहीं कर सकते, स्ट्रेस का कैलकुलेशन हमारे हाथ में नहीं है। सो बट यू हैव टू रिमेंबर एंड इंश्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड इन अवर फिजिकल हेल्थ ऑलवेज। डोंट थिंक कि प्रॉब्लम आएगी तब हम उसके बारे में तैयारी करेंगे, प्रॉब्लम आने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम कुछ तैयारी कर सकें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज टू कम इन योर लाइफ. It's on you how you take. A challenge can be an opportunity as well in the life. This is Wow. second important thing. And the next important thing is your timings for your sleep and your food, which is very much disturbed. हम काम करते हैं तो इतना लेट नाइट तक चले जाते हैं काम करते करते कि हम सोते देर से हैं और अल्टीमेटली मॉर्निंग में उठते देर से. So somewhere down the line we are affecting the biological clock, और उसके साथ साथ हम खाते भी रहते हैं और उसी तरीके से हमारी हेल्थ भी इफेक्ट होती है. तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो सोल्जर्स हैं दे आर फिट इन द आर्मी टू टेक एक्शंस अगेंस्ट एनीथिंग. तो जिंदगी भी वही है कि अगर हमें अपनी जिंदगी का सामना करना, हमें नहीं पता किस चौराहे पे चैलेंज है, किस चौराहे पे आराम है, बट अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, हेल्थ, स्लीपिंग और टाइमिंग्स एंड द फूड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाइट डाइट में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आप अलग अलग चीजें खाते हैं, दैट्स एज पर योर कंफर्ट, बट मेक द टाइमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चार चीजें अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस अप कर लेते हैं, सो यू विल सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है वो है योगा एंड मेडिटेशन. Wow, that is essential. सो अगर हम योगा की बात करें तो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी. अगर आप सिर्फ एक बेसिक एक्सरसाइज सीख लेते हैं विच इज़ अबाउट द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जितने भी प्रोसेसेस रही हैं, आप अगर आप देखो कि जब भी आप टेंशन में होते हो तो हमेशा बोला जाता है टेक डीप ब्रेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन. Inhale, yeah. यस, इनहेल एक्सहेल, दैट्स द बेसिक टोल्ड इन द योगा एज वेल. जब डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं तभी बोला जाता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, चेक आउट. पॉजिटिविटी सेशंस में भी कहता है कि ब्रीद इन पॉजिटिविटी, एक्सहेल आउट नेगेटिविटी. ब्रीदिंग आपको बढ़ा रहे हैं. तो आप फील करोगे कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठ करके नेचर के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, यू फील लॉट ऑफ पॉजिटिविटी टू स्टार्ट इन योर सेल्फ. वन डे मेहनत, यू विल फील पॉजिटिविटी. अगर 5 दिन की मेहनत कर ली तो और ज्यादा पॉजिटिविटी. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नींद को छोड़ करके जाना पड़ेगा. द कंफर्ट जोन यू हैव टू लीव बिहाइंड. तो जिसको भी जीवन में स्ट्रेस को जीतना है, जिसको भी अपने सपने को जीतना है, सबसे पहले अपनी नींद को जीतना पड़ेगा. क्योंकि नींद आती है सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं. कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो कल कभी नहीं आता. और जब हम सोते रह जाते हैं means we have missed out that time of recharge in our life. Usually आपने सुना होगा कि जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है. क्यों? Sun energy great to recharge, the nature energy great to recharge. अगर यही चीजें हम दिन के 10 बजे करेंगे, not possible. इफेक्ट नहीं होगा. वो एक कहावत भी ना, जो सोवत है वो खोवत है. Exactly. So it's a recharge of the energies. Yeah. Wow. Please. So physical health, mental health, time management, and taking care of our nutritional needs and our diet, and little bit of yoga and meditation is the correct way to walk. That's what we discussed till now. Very nice. I think I think it's a big sign for executives and also students who study through the night. As you said, everything is at the backlog and left for the last minute. So wo mat kariye. Try to be an early riser. And as you said, sun energy really makes a lot of difference. People say, no, you should walk barefoot early in the morning on the grass. That is very beneficial as well. So there's always a, factual, corroboration to all the things which we hear from elders. So Abhinav, now that we have talked about, stress in general, what about relationships? I think a lot of people are going through a lot of stressful times in their relationship also, after the pandemic, long distance. A lot of times, people complain, we are together at home, all the time, our whole life has turned upside down. So, anything
for the viewers to manage stress when it comes to relationships and friendships and marriages and other, with in-laws, with people around us per se? See, I guess the primary issue is with self. जब हम स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो दो ही चीज़ें होंगी। या तो उस स्ट्रेस को आप अपने अंदर होल्ड करते रहोगे, सफ़र करते रहोगे, या फिर उस स्ट्रेस को आप बाहर निकालोगे। स्ट्रेस को बाहर कैसे निकालोगे? कि किसी ने आपको हल्की सी भी सुई चुभवाई और आपने सारा गुस्सा उसको निकाल दिया। यानी कि रिलेशनशिप में किसी एक ने भी कोई ऐसी बात कही जो आपको समझ में नहीं आती है, पसंद नहीं है, वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो आपने होल्ड किया हुआ था, ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस टुगेदर, इट विल कम आउट। The biggest mistake in the relationships we do is judging and assuming. दूसरा इंसान क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हम उससे पूछने के बजाय अज्यूम करते रहते हैं। और अजम्पशन को हम इतना ग्रो करते रहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं इन द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, वट एवर यू मैनिफेस्ट कम्स टू योर लाइफ। अक्सर से आपने Yeah. देखा होगा कि अगर कपल है और the guy is not talking to the girl completely or avoiding or less of communication because maybe he's busy with project, he has some technical issues in the professional life, Yeah. the girl is not getting answer, वो सोचती रहती है इसने ऐसा क्यों किया, इसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये कहाँ बिजी है, ये क्या कर रहा है, कहीं सा कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है, कहीं कुछ कहानी तो नहीं हो रही है। तो दिस इज ऑल शी इज थिंकिंग, मैनिफेस्टिंग, द सेम इज गोइंग आउट टू द वर्ल्ड and the same will happen as per the law of attraction into the reality. So do not judge and do not assume. The first thing of a relationship, if you will do this, it will add more to your stress, the more anxiety. So ask to your partner, what is the issue? If the partner is not telling you, give some time, let it happen for some time. And if the communication does not happen, the best way is that with your positivity, send that positive energy to the other person, pray for that person, send positive vibrations, bless that person with peace. लेकिन उसके लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप जब तक आप अपनी एनर्जीज में पॉजिटिवली मजबूत नहीं होगे, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आप आगे वाले को भी नहीं दे सकते पॉजिटिवली। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। Of course, I think, well, so rightly said and put, it starts with us, and we have to, like, and when we are like positive and we are thinking and we can bless and, pray for the other person. And viewers, please keep this in mind. A lot of time there's a lot of miscommunication and misconception. So you should actually try to think pragmatically, as Abhinav suggested. Abhinav, we have a question from our viewers that, when you have advised to do the inhaling, exhaling exercise, the yoga, what is an ideal time per day? Because everybody is on the move and, they are anyways, very pressed for time. So minimum kitna karna chahiye roz, like, which is ideal for the body See, to keep moving? अगर आप 1 मिनट के लिए भी कर लेते हैं ना, दिस इनहेल एंड एक्सहेल एक्सरसाइज कैन बी डन एनीवेयर। लेकिन अगर आप अच्छी सराउंडिंग में नहीं बैठे होगे, तो क्या इनहेल करोगे और क्या एक्सहेल करोगे? अगर आप दिन के हैवी पोल्यूशन टाइम में इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, तो वही पोल्यूशन को आप अंदर खींच रहे हो। आई एम श्योर द बेस्ट टाइम वुड बी when during the morning hours when the sun is rising in, you can be there in the nature, do a minute or two of inhale exhale, and you will feel a mix of lot of energies together to recharge the battery of your life. Otherwise during the day as well, when you are at your workplace and suddenly pressure आ गया बॉस का या क्लाइंट का कि अभी चाहिए, अभी इमीडिएटली, और आप स्ट्रेस में कि अभी तो उसकी डेडलाइन है, इसकी डेडलाइन, और इसने भी मांग लिया, क्या? ठंडा ठंडा पानी पीजिए आराम से, अगर गर्मी है तो, और रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एसी की हवा चल रही है, आराम से। ये दो चीजें आपको कूल डाउन कर देंगी। मैंने आपको कुछ अलग से नहीं बताया, इट्स द वेरी बेसिक थिंग, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। जल और वायु की ऊर्जा ऐसी है जो कि आपको शांत करे, रिलैक्स करेगी। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। Wow. Yeah. So apt, so easy to apply also. We have another question from our viewer. Do you undertake corporate sessions? Yeah, I do take corporate sessions because these days people sitting at home is not the only focus. People who have come up from home to the workplace, it's a difference of environment. हालांकि खुशी बहुत है कि घर से निकल करके ऑफिस आए हैं,
अपना वापस ऑफिस स्पेस मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदत छूट गई है। और Hmm. उसके साथ साथ हमें अब इस पेंडेमिक के बाद सीखना ये जरूरी है कि पहले ऑफिस का स्ट्रेस लेकर के हम घर जाते थे और फिर घर जी. पे डिस्टरबेंस होती थी, या घर का स्ट्रेस लेकर के ऑफिस जाते थे, Hmm. हमारी Hmm. परफॉर्मेंस भी कम होती थी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को हमें हैंडल करना जरूरी है, सीखना जरूरी है कि स्ट्रेस मिलेगा तो अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर पाओगे और बैलेंस कर पाओगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को टुगेदर। So Wow. I do sessions. Yes, I am focusing towards taking the corporate sessions as well. So, wow, HR personals and admin heads, please take note. And also, our viewers, if you think there is an activity planned and you want to invite Abhinav, do connect. So, Abhinav, thank you so much for your tips. So, another thing, a lot of people have turned entrepreneurs, everybody is walking that path. And again, a job related stress is different, a business running stress is different. So, any tips there? देखिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उनकी जंग सिर्फ दुनिया से नहीं है, उनकी जंग उनके परिवारों से भी है। क्योंकि अगर वो अपने सपने को लेकर के अकेले खड़े हुए हैं, तो हर पल चुनौती है कि कैसे कामयाबी मिले, और कामयाबी नहीं मिली तो बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इस Yeah. पॉइंट पे सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो पावर है, वो है उनकी सेल्फ पावर, उनका विजन, और एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग जो कि मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ और हमेशा मैं सिखाता भी यही हूँ कि पहले हमें ऑप्शन मिलता था, एक कहावत जो हम कहते थे कि कहावत नहीं, क्रांतिकारियों का डायलॉग होता था, करेंगे या मरेंगे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे करेंगे या मरेंगे, लेकिन वहां पे थे हमेशा दो ऑप्शंस, अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे। लेकिन आजकल की टाइम में एक एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी इंसान के लिए जो अपना सपना पूरा कर रहा है, एक ही लाइन है, करेंगे और करके रहेंगे। देयर इज नो सेकंड ऑप्शन, करना ही करना है। जब ये Can't विजन wait. बना लिया तो देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो बफर प्लान, देयर इज नो बैकअप। द फोकस इज टुवर्ड्स द विजन। और सबसे अच्छी बात, वो सुनते सबकी हैं, लेकिन फोकस रहता है अपने दिमाग पे, अपने टारगेट पे कि हमें उसको करना ही करना है। सो स्ट्रेस वहां पे है, और वहां पे भी रिजॉल्व करने का यही तरीका है, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वर्क स्ट्रॉन्ग सिपाही की तरह मजबूती से। तो स्ट्रेंथ भी बनानी पड़ेगी ना। So stress Wow. is important to learn. Definitely, they need a kind of a motivation or a mentoring to make them strong to that path. And rest, कहते हैं ना कि गाड़ी को धक्का लगाने के लिए हल्का सा ही इग्निशन चाहिए होता है, उसके बाद तो गाड़ी अपने आप सीट पकड़ लेती है। That's where the coach comes up as a mentor to give the right direction, give an extra push to I the know. movement, and they will catch up the speed. I think this is such a insightful, session for me also personally. I think we all need someone like a coach like you, जो कि हमें वो हल्का सा पुश करे, and as you said the ball rolls after that. हल्का सा हमें चाहिए होता है, थोड़ा सा push, and उसके बाद है we can take it from there. So Abhinav, I wanted to also ask you as a career option, because uh, careers now, kids are now, diversifying into newer, career paths. So, what all does it take to, walk this path, be enabled to help people? As you said, there's also a, spiritual and intuitive angle. A lot of times, you get that it's a blessing. So if you can, help our viewers, also decide, if they want to, in the future, help others once, they feel they can make a difference. So how to walk this path? See, before the student chooses the path to join, I think when they are in the school itself, in the class 10, then they have a direction to move forward कि ultimately किस stream की तरफ जाना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे एक सवाल पूछना कि what is your goal? What is your dream that you want? The goal setting happens at a very later age in the colleges when we study the organizational behavior, self-management, the different topics. देर हो चुकी है। लोग तो जब 10वीं में हैं और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, तब उनसे सवाल पूछना चाहिए कि तुम बनना क्या चाहते हो? अक्सर से लोग जवाब देते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्रीम दैट दे हैव। जो सराउंडिंग्स दिखाती है
या इंस्पिरेशन मिलती है वो उस डायरेक्शन पे चल पड़ते हैं. जैसे कि वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक ड्रीम्स. सपोज somebody says कि मुझे MBA करना है. क्यों करना है MBA? The goal should be that I want to become a CEO of a company, Tata, suppose any XYZ Yeah, company, yeah. in a span of 10 years with a package of 1 CR. This is a very specific goal. अब उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या चाहिए? Then the decision happens. Usually this does not happen. तो जो लोग अपने करियर मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, they should get a specific counseling for their kids. कि अगर आप इंजीनियर बन रहे हो तो क्यों बन रहे हो? What is the purpose? Maybe you can do better in a more planned way. So that's how the career counseling happen, in which we guide them the right direction and understand what is their personality, how well they can do in which stream. Also the aptitude, as you said, and also a fallback option, so it has to be thought of clearly. So first the goal, and then the other, things around it. Yes, yes, true. So viewers, there's another exciting news. Abhinav has graciously, offered to connect with 3 lucky winners of a small, question which we have formulated. So for a one-on-one specific session with him. So don't lose this chance. You will really benefit, I'm sure, from a one-on-one guidance with him. So Abhinav, thank you so much for that. We'll be floating the contest soon. So Abhinav, any parting thoughts for our Family Affair page in general? Thank you so much that you chose me and you got me connected to so many people over here. I always say one simple thing that we all are mediums to each other. Like I got connected to you, you got connect me to the audience over here. We all are mediums to each other. Whenever it is a right time for us to learn something from the other messenger, we take that energy. So like people have got connected here today, maybe it's time for them to understand stress, how to handle it, how to prepare themselves for their life journey. Is the right time for them to get active. Let's connect. Maybe हो सकता है मेरे माध्यम से आपको कुछ और सीखने को मिले और आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएं. So thank you everyone. Thank you so much, Richa, and thank you to all your members and the audience. And with this closing session, and I just make my small gratitude note to the divine for allowing me to connect over here. And I pray for every one of you that you all get strength and positivity and the ability to practice peace, handle the situations in a stronger way, understand your actions, and make more positivity. Let's have the global peace and the positivity everywhere. Thank you. Thank you so much. That was so powerful. Thank you so much for touching our lives. As you said, there's always the right time and it's never late. So, audiences, friends, please make note and please avail the facilities. I will also mention Abhinav's handle so you can connect with him one on one, and we'll be having our 3 lucky winners who will be connecting with him soon. So, thank you so much, Abhinav, for taking out time. Good luck to you, and thank you so much for doing this for us. Means a lot. Thank you. Thank Good you so much, day. Richa. Good night, Thank you to all everyone. audience. Thank you. Thank you.